The National Testing Agency has now in fact decided to cancel the UGC NET exam a day after it was conducted, saying that the integrity of the examination may have been compromised. Now, the UGC NET was conducted on June 18th at 1,205 exam centers in 317 cities across the country. Now, over 11 lakh candidates appeared for the exam. This development comes amid similar discrepancies that have been reported in the NEET UG 2024 examination, with allegations of question paper leaks being raised in states like Bihar. As many as 67 students scored a perfect 720, unprecedented in the NTA's history, with 6 from a centre in Haryana's Faridabad figuring in the list, raising suspicions about irregularities. Now, it has been alleged that grace marks contributed to these 67 students sharing the top rank. But ever since these anomalies have come to light, viewers, we've seen students take to the streets in order to protest, in order to lodge their grievances. But are we seeing action? Because ever since then, ever since these anomalies have come to light, we've also seen a paper leak nexus come to fore. The operation of these paper leaks nexus, whether in Godhra in Gujarat or Patna in Bihar, have now come to light as well. But since then, students have consistently put forth their demand, while the centre has stated that it will conduct the re-examination for the 1563 students that have been granted grace marks. The other NEET aspirants are saying this is not enough. Meanwhile, my colleague Arzu Seth joins us on the broadcast. Arzu, you've of course been covering this issue live for us. You've been speaking to so many students over the course of the last few weeks. You're of course still on the ground with many students. Let's in fact hear it from them. What do they have to say with regards to the centre now scrapping the NET examination? Do they expect this to happen in their case as well? Well, Priya, while the legal battle for the NEET students is continuously going on, and amid that, you know, the UGC NET has been cancelled by the government. What these students think about this, what these aspirants think about this? आपका ये आप पहला अटेम्प्ट देंगे इस बार NEET का? Yes, ma'am. अच्छा, तो किस तरीके से, क्योंकि कल UGC NET का पेपर जो है वो कैंसिल किया गया है, तो क्या आप लोगों को लग रहा है, एक होप आप लोगों के लिए हुई है कि जो NEET का धांधली सामने आई थी उसमें भी कैंसिलेशन होगा? मैम, हो सकता है, मतलब चांसेस है उसके, क्योंकि ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है शायद से, तो इसीलिए थोड़ा मोरल डाउन होता है हमारा भी इस बात पे। तो क्योंकि अभी तो आपने अटैम्प्ट भी नहीं दिया है, कोचिंग स्टार्ट की है। इस वक्त हम फिजिक्स वाला वी आर स्टैंडिंग राइट आउटसाइड द फिजिक्स वाला कोचिंग एंड अलक पांडे हु इज़ फाइटिंग दिस फाइट फॉर द स्टूडेंट्स। तो किस तरीके से जब आपको पता चला कि पेपर लीक हुआ है, कितना आप लोगों को इफेक्ट किया उस चीज़ में? मैम, थोड़ा सा किया कि क्या पता अगले साल भी हो जाए, फिर से कट ऑफ और आए चले जाए, ना हो अगले साल भी, तो ऐसे मैम होता है। बिल्कुल। कितनी उम्मीद है, क्योंकि अभी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, क्या लग रहा है, उम्मीद है अभी भी? आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है, हमें जस्टिस मिल सकता है, बिकॉज दिस इज़ इंडिया एंड यहाँ पे जस्टिस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड ऑब्वियसली इस साल पेपर लीक हुआ है एंड अगले साल भी होगा। पेपर जो 10 लाख पर पेपर मिलना स्टार्ट हो चुका है, स्टूडेंट्स आर बाइंग दिस ईयर टू। तो आई थिंक दिस इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग सो मच, दे आर डूइंग सो मच ऑफ द हार्ड वर्क। वो अपना 1 साल 2 साल एकदम तपस्या की तरह वो कर रहे हैं, एंड उसमें ऐसे आप पेपर खरीदे जा रहे हैं। दिस इज़ रियली नॉट फेयर for the one who is dedicating his 2 years in hard working. This is not actually fair. You guys are also going to give the first attempt? Yes, ma'am. So what do you think, you know, this discourage you guys as the news come of the paper leak? Yes, ma'am. मैम, मतलब बच्चे 1 साल तक मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आराम से NTA पेपर लीक कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा है। जैसे हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, 1 साल तैयारी कर रहे हैं, 12-12 घंटे तक पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसके बाद एकदम से पेपर लीक हो जाता है, हमारा फ्यूचर एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता है, और NEET NTA पेपर इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहा है।
50 लाख रुपए ले लेकर और बच्चों की फ्यूचर ही वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या कुछ करना चाहिए इसको लेकर? कोई क्या कुछ मांग है आप लोगों की? किस तरीके से क्या सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है लगता है आपको? गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन बनाने चाहिए, पेपर मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स रियली ईजी टू बाय द पेपर। बिकॉज एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो एंड इन 10 लाख रुपीज़ यू कैन एक्चुअली परचेज द पेपर। सो इट इज़ सो ईजी, इफ़ यू हैव द मनी यू कैन बाय द पेपर। एंड आई थिंक गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए इससे रिगार्डिंग, बिकॉज 23-25 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जामिनेशन, तो ऐसे कैसे कुछ भी हो सकता है। Rightly said, rightly mentioned that lakhs of students are giving their examination, are giving their exam, and after that the paper get leaks and their future get into in the dark. Also we have one more aspirant. क्या नाम है आपका? मयंक माथुर। हिमांशु, क्या लग रहा है क्योंकि कल नेट यूजीसी का पेपर जो है उनको लगा कि उसमें भी धांधली हो सकती है, इसलिए उसको जो है कैंसिल कर दिया गया। नीट की लड़ाई अभी आप लोगों की चली रही है, क्या लग रहा है इस सब के बीच में क्या हो रहा है ये सब? मैम एनटीए ने तो पहले ही हमारे जो पेपर है वो लीक कर दिया है, उनको यही लग रहा है कि दूसरी बारी में भी लीक के चांसेस हैं। लेकिन अब अलख पांडे हमारे जो सर हैं पीडब्ल्यू के सीईओ, वो लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस बार इन्होंने जो पेपर लीक करके किया उससे बहुत कट ऑफ इतनी हाई चली गई है, जो बेचारे बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। पहले मैम 650 पे हमें अच्छा कॉलेज मिल जाता था इस बार, लेकिन अब हमें मैम 650 पे मैम रैंक की मैम 20,000 अपर जा रही है मैम। तो मैम बच्चा क्या करे? एक बच्चा बेचारा 300 वाला सेकंड अटैम्प्ट मैम प्रैक्टिस करके 600 तक पहुंच सकता है, वो तो तैयार बैठा है, लेकिन इतनी सीट्स ही नहीं है कि वो उनको अडॉप्ट कर पाए, मतलब उनको ले पाए, उनकी सीट्स नहीं मिल पा रही। और उसके ऊपर से ये कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, पेपर लीक कर रहे हैं। एक ही सेंटर से 27 बच्चे के 720 आ रहे हैं। जिस बच्चे के 400 बैठ रहे हैं उन्हें ग्रेस नंबर्स दे के 650 प्लस कर रहे हैं। तो बेचारा मेहनत करके 500-600 लाने वाला वो बेचारा क्या करेगा? और आप लोगों की अगर बात करें तो आप लोगों के करियर की शुरुआत है, और शुरुआती दौर में जब आपको और मेहनत करनी है और उस समय आपको ये नज़र आ रहा है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको आंसू बहाने पड़ रहे हैं, वो लोग स्ट्रीट पे आ गए, मोरल डाउन होता है आप लोगों का भी? यस मैम, बहुत होता है। घर वाले बहुत होप से भेजते हैं कि बच्चा मेहनत करेगा हमारा। बच्चे भी मेहनत बहुत कर रहे हैं मैम, दिन के 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना मजाक नहीं होता मैम। इतने प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चंस की रटना होता है। लेकिन अब पेपर ऐसे एकदम से अचानक लीक हो जाएगा। कुछ सेंटर्स पे पता चल रहा है कि टीचर्स ही बच्चों के फिल कर रहे हैं आंसर्स। तो मैम ऐसे तो बच्चे क्या ही करेगा? बच्चा तो अपनी मेहनत ही कर सकता है। अब कोई बेचारा बच्चा पैसा जोड़ के पूरे साल भर की कोचिंग की फ़ीस ले रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो मैम एनटीए को तो ये पेपर करवाना ही नहीं चाहिए। फिर क्या कुछ डिमांड है, क्या लगता है क्या कुछ करना चाहिए? मैम ये पेपर मैम एनटीए के बजाय सीबीएसई को दे देना चाहिए। मैम नीट का जो पेपर का लेवल है वो ही इतना नीचे गिरा दिया, और कट ऑफ इतनी हाई जाएगी तो बच्चे कहाँ से मिलेंगी? सीट्स है ही नहीं इतनी, जो मैम इतना पेपर गिरा रहे हैं। थोड़ा पेपर का लेवल भी हाई होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैम एनटीए को ये पेपर रीनीट होना चाहिए, जिसकी वजह से जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उन्हें मौका मिले, और इतनी जो कट ऑफ आई गई है उससे वो मिले, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैम। Sure. So the discrepancies that has happened in the NEET result, students here are demanding that there should be a re-NEET, because they have studied a lot. They have spent their entire day and night working hard. In fact, their parents are also struggling with these students, and they are demanding that there should be a re-NEET, and also they want that the central government should take a strict action against NTA should be scrapped, and there should be another agency, there should be another organization that should organize their exam. Bringing the voices of the students in the forefront. They are raising their demands for over weeks. Meanwhile, also joining us on the broadcast is another such student who has been working tirelessly. Mansi Bisla joins us today morning. Thank you for taking out time speaking to us. At the outset, I would like to ask you, how long have you been preparing, and what's the kind of effort that you have put in for your examination? Ma'am, first of all, good morning to everybody. And I have been preparing for 2 years, and I gave this examination on the 18th, and I was expecting a good score. So I was like, okay, finally my hard work is going to pay off.
But then yesterday I got the news that the paper has been cancelled. So it has been quite a blow to me and my confidence that we put so much hard work and suddenly they just come up and say, okay, we will take another exam. So this is very unfair for everybody who have been preparing for quite some time now. And what would you urge the authorities? Because it seems that as far as the other aspirants, the NEET aspirants are concerned, a paper leak nexus has come to light. And as far as the UGC NET exam is concerned, it seems that inputs from the Home Ministry have indicated that from the Cybercrime Unit in particular have indicated foul play with regards to this. So the common denominator does seem to be the NTA. So what would your appeal be to your representatives in the government, to those in power, as far as taking action against negligent officers are concerned? Ma'am, I guess this is the worst thing that can happen to anybody, any student who has been preparing. So they should take very strict action. And I guess honestly, is bar, since they were taking all these subjects का paper in a single day, so there were already concerns कि ऐसा ना हो जैसा नीट के बच्चों के साथ हुआ है, क्योंकि इससे पहले नेट का एग्जाम जो है अलग अलग दिन होता था, कंप्यूटर मोड में होता था. This was the first time they shifted everything. So we were expecting कि चलो गड़बड़ ना हो. हमें पहले ही चिंता हो रही थी कि जैसा इन बच्चों के साथ हुआ ऐसा हमारे साथ ना हो जाए. तो हमें लगा था कि ये लोग ढंग से कंडक्ट कराएंगे, इनके पास है मशीनरी, तभी इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया होगा. बट लाइक दिस इज द वर्स्ट थिंग. उन लोगों को अच्छे से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो बच्चे इतनी मेहनत करके फाइनली पेपर दे रहे हैं. फिलहाल इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग एजुकेटेड है, ऐसा हमें रिपोर्ट्स बताती हैं. तो एजुकेटेड बच्चों के साथ ऐसा होगा तो वो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे ना. लाइक दिस इज द फर्स्ट स्टेप नेट वाला कि वो क्लियर होगा तो दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स. तो ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि डेटरेंस क्रिएट हो. ऐसा कुछ करने से पहले लोग सोचें कि इससे तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, ताकि वो बच्चों की लाइफ खराब करने के बारे में सोचे भी ना कभी. All right, and you stated that, you know, there was a change from the computerized system to a written system, and all the examinations were being held on a single day. Do you think, as you've said, do you think this has contributed to some irregularities coming to fore? And what would you suggest? What are the recommendations you would make as far as systemic changes are concerned? Ma'am, I think that it's very good that if they want to change something, that's fine, but it should be gradual. Like, you should take tiny steps and ensure that the process of the change is smooth. Like, they did so many changes together. Like, they shifted from computer-based to pen paper, and generally it is believed that it is easier to leak a paper which is like printed one, right? So computer-based में it's more difficult because the paper gets displayed on the screen after the examination starts. इसीलिए पहले कंप्यूटर बेस्ड किया जाता था. सो दे शिफ्टेड फ्रॉम कंप्यूटर टू पेन बेस्ड एंड देन दे डिसाइडेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे. सो दैट वाज ऑलरेडी, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था. तो पहले ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो, ये लोग करा लेंगे कंडक्ट इतना सारा साथ में, बिकॉज वी ऑल नो द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एनडीए इज नॉट वेरी गुड. ठीक है, तो अगर आपको चेंज करना है तो ग्रेजुअल कीजिए ताकि जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ रहे, सबके लिए स्मूथ रहे, बच्चों के लिए भी स्मूथ रहे और आप लोगों के लिए भी स्मूथ रहे कि आप आराम से चेंज कर पाएं. ऐसे नहीं ना कि एकदम से सब कुछ आप चेंज कर रहे हैं. All right, we've heard it from Mansi, but also joining us on the broadcast is Shivam Bajaj, another NET aspirant who's recently given the examination. I would also like to ask you, how long have you been preparing for? What's the kind of effort that you have put in, and how do you receive the news of the re-examination? First of all, good morning, everyone, and thank you for this opportunity. Students like us, students like myself, really need a platform for someone to hear them. And when I heard this news, read this news in the morning itself, it was heartbroken. I was heartbroken. I mean, I had prepared for, it was my second attempt for NET, and it was an OMR sheet evaluation method which was chosen. And first of all, I think
this should not be the case this time, because last time it was a computer based exam and it was not at all done in a phased out manner, but instead, like my colleague also said, like instead all the subjects were taken this time in a pen and paper mode, which is OMR sheet as they call it. Right to education is quite essential. I mean, it's for everyone and everyone has the right. And if such cases of paper leaks continue to happen under any governments whatsoever, this is a major drawback for any authority who is in power, any government. And I also believe that safeguarding the question paper is more important than safeguarding the government officials, because they are already getting safeguarded with a lot of security in place. But I don't think that security is coming to question papers. That's what the leaks are taking place. So it should not happen. Indeed, and I have another question with regards to, the probe that is taking place. Now, the center has ordered a CBI probe into this matter. How confident are you that it will yield appropriate results in the officials, that the NTA officials that have indulged in negligence and malpractice will be held accountable? Looking at the probe which is being ordered, I frankly do not think that's going to resolve in a very short amount of time, because we all know amount of pending cases we all are having. We all know the amount of legal justice people in India get, especially students get. So I don't think this will resolve in maybe less than 8 to 9 months. It can also take 1 year or 2 years at max. What I would request from the government, and I would need from the government, obviously I'm representing all my students here, all the students who gave the exam, not for my subject, but for all subjects. They should at least provide us some kind of counseling, because a lot of students, including me, I'm a working professional, a lot of students and working professionals who were about to get admissions into PhDs and their lectureship, PhDs, and get better job opportunities, but I don't know what will happen now. So government should give some relaxations in terms of admissions to universities, colleges, and this probe should really speed up. It's need of the hour. And one because last... 6 to 8 months. Indeed, Yeah. Go ahead. I was telling 6 to 8 months, I can surely see that it will not get resolved before that. But it's truly disheartening. So you think it will all return back to square one next year as well? And what is your message to your fellow NET aspirants, those who of course are looking at going and taking on positions of being lecturers and teaching the next generation of students? Like I said, this is the this is the bad example of how right to education is being practiced, and it is being imbibed by the students. I mean, in terms of paper leaks, the only message I can give to, say, other students is that we should not lose hope, because at last we are in a democracy and the world runs on hope. And if we can just hope that justice will come, justice will prevail, and we should not, stop preparing. I do agree that being a working professional, I am sure a lot of people, in fact, the center I gave exam in, there were about 1,000 to 1,500 people who were giving exam on the same day on different subjects. Most of them were for journalism and mass communication, my subject which I gave paper for. So we should not stop preparing, and there are a lot of online modes, online courses, but still I think we should not lose hope. Yes, it will take time. It will take a lot of time, because the thing is, if this would have come before the elections, is what I believe, this case would have been fast-tracked. But since elections are over, the government is in place, this will take a lot of time, like normally. So I think we should wait and watch what justice comes to us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.